Good morning. Hello kids. How are you doing? Good morning and welcome to another super cool, super fabulous and absolutely amazing session that we are going to be taking right now, right here. Yes, so good morning my dear kids. Good morning, good morning, good morning. So many of you are appearing or going into class 12th board exams in a matter of few days now. You've been continuously, consistently messaging me that ma'am, we have so much of problem. हमारा पूरा एक बार बोर्ड का रिविजन करवा दो. So keeping that in mind, we have launched and it's going on pretty successfully the 12th CBSE board sprint, right? तो ये जो 12th CBSE board sprint है, this is not only for board exams कि आपके 65-70% marks आ जाए. You know in how much depth we go per topic, making sure that each and every word that we are telling you, each and every word that we're telling you is not only important from MCQ point of view, but is equally important. You can frame it in the form of a question as well and answer as well. So welcome my dear kids, my dear we Biotonians for whom we are struggling, we are working hard day and night. Only for you we will make sure that you get a seat, because your success, you getting a seat, your success is the only thing that we would want to do now. Your success both in your board exams as well as in your NEET exam is our biggest motivator for us, and your success is something for which we are striving day and night. Yes, तो चलो 12 CBSE बोर्ड स्प्रिंट को स्टार्ट करते हैं. आज का टॉपिक है हमारा एवोल्यूशन विदाउट एनी further delay. And you know this, I've been consistently telling in all my classes, we only focus on one thing and that's quality education. So if you're here for any kind of time pass, you're here for enjoyment, आपको लगता है टीचर गाएंगे, गाना सुनाएंगे, टीचर आपस में खिलखिलाएंगे, मुस्कुराएंगे, so all of that is not going to happen in our class. We stand purely for education, and let's now absolutely start the class. चलो, moving ahead to the topic of evolution, every word of your NCERT will be discussed in a lot of detail, so you don't have to worry about it. Every word, everything will be done in a lot of detail. Start kiya jaye. This is your favorite Dr. Vani, who's been awarded twice at TCon as the best teacher. TCon happens to be Vedantu's platforms, teachers conclave, where the teachers who are loved by students and who've been instrumental in making sure the teachers that students realize their potential get awarded. चलो, so start करते हैं इस TCon के बाद and आगे चलते हैं. वेदांतु बायोटॉनिक हमारा awesome channel है. We I've got more than 10 years of teaching. I've been teaching from 2010 right up to 2020 now. Have produced consistent AIMS ranks. So that's something that is very great, very credible about this channel, and you can trust us to make sure that you get a seat. Done? चलो शुरू करते हैं आज की super awesome class. Okay, this is the most important slide बच्चों. सारी मोटिवेशन, लेट नाइट मोटिवेशन, अर्ली मॉर्निंग मोटिवेशन, कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा टाइम टेबल बनाना है, क्या करना है, एवरीथिंग इज गिवन एट Vedantu_Biotonic. एवरीथिंग. सो Vedantu_Biotonic जो हमारा चैनल है उस पे आइए. टेलीग्राम पे है ये. वेदांतु बायोटॉनिक तो चैनल है, ये टेलीग्राम का का लिंक है, इस पे आइए, ज्वाइन कीजिए एंड मेक श्योर यू बिकम अ पार्ट ऑफ द फैमिली एंड यू फील ऑल्सो दैट यू आर बीइंग टेकन केयर ऑफ और आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो रही है. यू आर बीइंग हर्ड. हर एक मैसेज को इंडिविजुअली आई टेक आउट टाइम टू रिप्लाई बैक एज वेल. चलिए, लेट्स मूव अहेड. सो ये रहा. इसके बाद आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ के हम देखते हैं ये हमारी क्लासेस है. अच्छा, दिस इज आवर ऐप बच्चों. ये एक बहुत ही ऑसम फीचर है हमारी ऐप का, लाइक द बेस्ट फीचर, द बेस्ट पॉसिबल फीचर, राइट एवरीबॉडी. सो इसमें क्या होता है नाउ, या मुझे लग रहा था कहीं हो सकता है यू आर नॉट एबल टू सी प्रॉपरली, बट नाउ यू कैन. यस, दिस ऐप is awarded app. 2019 में इसको प्राइज मिल चुका है. It's an awarded app. Classes, quizzes, leaderboards, fastest finger first, all of this happens in our class. App पे अगर आप जाएंगे, you can see the live classes in progress. Maybe my class, you can just enter my class and get the feel of real teaching. Absolutely unadulterated, joyful, amazing, real teaching. So please make sure you become a part of the app also. And the most important question which I want to ask is, do you want to top in your board exams?
Do you want all India rank 1 in NEET? Do you want to make sure that your parents are proud? Do you want to make sure that your friends, your family members, your brothers, sisters, everybody is very proud of you? If you want that, make sure you become a part of a super amazing crash course. तो आपको हमारे crash course का part बनो courses. और यहाँ से शुरू करते हैं हम theories of evolution. Is that clear? So this is a very important class on evolution. Very important. पूरा का पूरा MCQs of the entire chapter are going to be done in this particular class. Full josh, full attention. So evolution. Evolution है क्या? Evolution is a stepwise process that how actually life came on earth, right? What you see here is a Urey-Miller experiment. Let me build up the story to the Urey-Miller experiment. It's very interesting. Why don't you open a paper and pen? Take out a pen. Open a paper. I'm going to be telling you some 4 or 5 small points which you should just note down. Lamarckism, Darwinism की theories आ रही हैं, but these small 2-3 points which I want you to write down. बहुत पहले, there was a father, his name was Father Suarez. So this Father Suarez said that all life, and this holds true for all religions. All the religions say that, the life was put on earth by a higher power, but we do not have any scientific evidence of the same. So this theory of, creation by Father Suarez was not accepted. Then somebody came and gave the theory of panspermia, that life came from external or outer space. This theory is also not acceptable because अगर life बाहर की space से आई, मान लिया, we agree with you, life could have come from outer space. I don't say no, but अगर अभी की life है तो वो बाहर की space में क्यों नहीं रह सकती? Right? So this theory was also negated, that how did life survive the harsh atmospheric conditions or the harsh non-atmospheric conditions outside? बाहर तो atmosphere ही नहीं है, oxygen ही नहीं है, cosmic rays है, UV rays है, बाहर life ने survive किया तो किया कैसे? Correct? So all of these theories, lot of theories were there. Abiogenesis, आपने गंदे कपड़े रखे, उसमें से कुछ निकल आया, तो हमें पता है कि गंदे कपड़ों के ऊपर बैक्टीरिया होंगे, मोल्ड ग्रो करना शुरू हो जाएगी. So there is biogenesis, right everybody? So all these very simple theories which are given in your NCERT, I do not think any child who's viewing this, who's in class 12th, will have problems with any of that. I have also taken absolutely amazing lectures on YouTube for evolution. You can go to our playlist and you can see them. Because in this, I'm going to focus only on the things which come in exams, be it your board exams, be it your NEET exams. तो ऐसे करते करते सबसे पहले ये जो बिल्कुल ही the theories which don't make any sense in 21st century, उनको हमने हटा दिया. 21st century में it doesn't make sense at all to say abiogenesis होता है, उनको हमने हटा दिया. So finally we kept the theories of biogenesis, that life can come only from life, and Louis Pasteur के swan neck flask experiment ने इसको हमारे लिए prove कर दिया. So Louis Pasteur's swan neck flask experiment proved it for us that life can only come from pre-existing life. So part 2 over. Now we move on to the next level. We move on to the next level. After that came 2 scientists, जिनमें से JBS Haldane, settled in the coasts of Orissa. So he was a British scientist. He came and he stayed forever in India. So there were 2 scientists called A.I. Oparin and JBS Haldane. Write it down. There were 2 scientists called A.I. Oparin and JBS Haldane. So these 2 scientists by the name of A.I. Oparin and JBS Haldane said that Earth was something like a hot prebiotic soup. The term hot prebiotic soup in your board exams or in your NEET exams was given by, correct, A.I. Oparin and JBS Haldane. Right? So इन्होंने कहा that Earth eventually. अच्छा, before I move ahead guys, like, शेयर, सब्सक्राइब नाउ. बच्चों तुम करते नहीं हो, प्लीज. यही हमारा ग्लूकोज है. दिस इज योर ग्लूकोज. आपने देखे बाकी कोचिंग वाले यो बड़े बड़े चार्ट्स दिखाएंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक. नो गाइज, हम वो नहीं करते. इसका मतलब क्या है कि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करोगे. वी वर्क सो हार्ड फॉर यू. रात दिन एक कर देते हैं आप लोगों के लिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं. कम ऑन गाइज, 1 लाइक, 1 शेयर, 1 सब्सक्राइब तो बनता है यार. This is the minimum that you can do for your teachers. Come on guys. And have you realized our channel? Have you seen our channel? How many people are there in our channel? ऐसे पूरी फौज खड़ी है. There's just one person. Just one person who's working in the morning, working in the afternoon, working in the evening, working in the night, doing everything from you, from morning to evening. So can you guys, come on you guys, you have to be with me because we work so hard. We, अब मुझे आई बोलता अच्छा नहीं लगता, but how many teachers have you seen on We Biotonic? Tell me, right? So guys, like, share, subscribe, tell your
friends, tell your family members, get more people onto it. We are working so hard for you. This is the least that you can do for a teacher. Yes, चलिए. So there were two scientists by the name of A.I. O'Parron and J.B.S. Haldane, और इन्होंने कहा कि there is chemical evolution, right? There is, atmospheric oxygen नहीं है, reducing atmosphere था. There was no free oxygen, oxidized कुछ भी नहीं हो पाया, and slowly, steadily ammonia वगैरह से there was lightning on the sky, there was volcanic eruption on the sea. इनकी वजह से धीरे धीरे chemical evolution हुआ. Then came two scientists by the name of Urey and Miller. जो A.I. O'Parron और J.B.S. Haldane ने कहा था, वो यूरे और मिलर ने प्रूव किया. यहां पे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूं. यूरे और मिलर में who was the teacher and who was the student in the comment section now? Not these comments, guys. No. Not these comments. A.I. O'Parron और जेबीएस हाल्डेन ने थ्योरी दी. थ्योरी को प्रूव करने वाले थे यूरे एंड मिलर. यूरे एंड मिलर में टीचर स्टूडेंट जोड़ी थी. हु वाज द टीचर, हु वाज द स्टूडेंट ऑन द कमेंट सेक्शन नाउ. द मेन कमेंट्स नॉट हियर. और जिसको पता है हिट द लाइक बटन नाउ. कम ऑन गाइस, अभी तक 500 लाइक्स हो जाने चाहिए थे यार. इतना टीचर मेहनत करता है, सो आपको बदले में यू हैव टू डू दिस मच फॉर योर टीचर्स ऑन योर स्क्रीन्स. कम ऑन. सो द थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी एंड आई बिलीव 100% नीट MCQ will come from this theory. There is no doubts about it. 100% NEET MCQ will come from this theory. Very important. Right, everybody? So this theory was proposed by a scientist called O'Parron and Haldane. Right? They were talking about primitive earth in this earth. इन्होंने सिर्फ propose किया था, इसके बारे में और कुछ नहीं बताया था. They were talking about primitive earth. What were they talking about? Primitive earth. Harold Urey and Stanley Miller conducted an experiment. उसके बाद आए Urey and Miller to prove the theory of chemical evolution as proposed by O'Parron and Haldane. They created a similar condition of primitive earth जैसे पहले था, the reducing condition without free oxygen, high temperature, volcanic storms थी, reducing atmosphere. The temperature was around 1400 to 2200 degrees Celsius. Can you imagine how warm it must have been? Right? So there was methane, there was ammonia, there was water vapor and hydrogen or heat. इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बनाया ये. दिस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वाज समथिंग लाइक लाइटनिंग, जो प्रिमिटिव अर्थ में होती है. लाइटनिंग को सिम्युलेट करता था. सिम्युलेट का मतलब होता है एग्जैक्टली कॉपी करना. सो लाइटनिंग को सिम्युलेट, इट यूज्ड टू सिम्युलेट लाइटनिंग. They make an electric discharge in a closed flask containing methane, ammonia, hydrogen and water vapor at 800 degrees Celsius. As a result, some amino acids were formed. इन्होंने exactly किया क्या? Let me explain the experiment to you. 500% this MCQ can come in an exam. एक छोटा सा चूड़ी या कुछ कंगन कड़ा ले जाना, right? So that you can, if it comes, or probably even an arc like that, so that you can draw this little circle here, right? Don't make a shabby diagrams. Diagrams give you a lot of marks. Do not make shabby diagrams and come, okay? Come here. Let's move ahead. So electric discharge, lightning हो गए. Lightning, it provides energy for synthesis of new compounds. So there's nitrogen, there's water vapor, there's methane, there's ammonia, there's hydrogen and there's carbon dioxide. So इन्होंने spark करते रहे. Spark was like lightning. सारा दिन, सालों साल, millions of years, the lightning used to happen. The lightning used to make and break bonds, make and break bonds, make and break bonds. So that is something which used to be happening here. Then the water used to go down. यहाँ पर इन्होंने cold water का condenser कर दिया, so that the water condenses. Can you see the water is condensing? Correct? So condenser cools the atmospheric gases in a rain containing new compounds. Rain form में नीचे अर्थ पर आ जाता था. पर अर्थ पे होते थे volcanic eruptions, lava निकल रहा होता था. So the water which used to fall down after cooling again used to get heated up and go up. But obviously again the chemical bonds used to make and break. Right? जब वो heat होगा, ऊपर भी chemical bonds make or break हो रहे हैं, नीचे भी chemical bonds make or break. So this cycle continued for millions of years. Right? Oceanic compartment. So heat a solution of simple chemicals to produce an atmosphere. फिर दोबारा heat, फिर दोबारा इधर. So this cycle continued for millions of years. Millions of years, the same cycle continued. After that, but they did not have to do. Urey and Miller didn't have to do it. Primitive earth, this continued for millions of years. Urey and Millers, after a few days, they found proteins and amino acids. So they collected this liquid and they found proteins and amino acids, and they said, yes, this is the exact way through which once upon a time evolution would have
happened, right? अगर ऑक्सीजन होता it would have got oxidized, जो भी बन रहा होता ऑक्सीडाइज हो जाता. So given a hypothetical situation, आज what would your answer be? क्या आज given a very hypothetical situation, क्या आज evolution हो पाएगा उस level का? बिल्कुल नहीं. Okay, so these are the answers which are given. Oh, name the two scientists who set up a special experiment to prove operance theory. AI operant and JBS Haldane ki theory was proved by Urine Miller. Urine Miller mein who was a student and who was a teacher, something which I've asked you, you have to write it down in the comment section. Guys, those of you who have joined the session late, your punishment, 1 like now. Come on guys, come on. Sara din, if you notice, I have a lozenge in my mouth and I'm taking classes for you. We work so hard, guys. You have to get more people on board, guys. That's our motivation for doing things for you, right? Chalo. Let's move ahead. So theories of biological evolution. There was a scientist by the name of Jean-Baptiste de Lamarck. क्या नाम था scientist का? Jean-Baptiste de Lamarck. He gave the theory of inheritance. He states that evolution of life forms occurred by use and disuse of organs, right? So हर एक theory मैं आपको बहुत easy तरीके पे यहाँ पे समझाती हूँ. सबसे पहले इस scientist ने एक नाम दिया एपिटेंसी. He used a word called एपिटेंसी. ये word आपके नीट और एम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. He gave a word called एपिटेंसी. What exactly is एपिटेंसी? एपिटेंसी means need. So he said that the organisms will have a need for anything. Everybody has needs, right? You also have a very severe need of a government college seat, right or wrong? Say yes or no. Just tell me, do you have a very serious need of a government college seat? Yes ma'am. But is it happening on its own? क्या अपने आप आपके सामने आपके समक्ष एक government seat ऐसे प्रस्तुत की जाएगी? Absolutely no. Absolutely no. You'll have to work hard for it, isn't it? Yes, you'll have to really work hard for it. Only then will it happen. So appetency और need के हिसाब से कुछ नहीं होता. Then he said that the genes which the parental generation has accumulated, they will always move ahead. I'll take a very classical example which I always take here now. क्या आपने प्रकाश पादुकोण के बारे में सुना? You've heard of the great badminton player, the All England champion, India's first All England champion, Prakash Padukone, Deepika Padukone's honorable father. Yes. So, but is Deepika Padukone an equally great badminton player? No, she's a finer actress. She's a finer actor, isn't it? So whatever the parents inherit, only if it's in the gametes. He said inheritance of acquired characters. Let me write it down. So he did say some things, but they did not make sense. He talked about inheritance of acquired characters. That means Salman Khan ke bacche should be born with a body. That doesn't happen. If they don't work out, they will obviously not have muscles like that. Yes or no? So he talked about inheritance of acquired characters. Is that clear? Say yes ma'am or no ma'am. He talked about inheritance of acquired characters. That's wrong. ऐसा नहीं होता है. Inheritance of acquired characters नहीं होता है. And he said use and disuse. Yes, to some extent. इसने famous giraffe का example दिया that the giraffe wanted to use its neck. And do you know we and giraffes, both of us have only 8 cervical vertebrae. Right? He talked about use and disuse, but partially true. What is the appendix doing in our body? हम तो उसको use नहीं कर रहे. What is the third eyelid doing? हम तो उसको use नहीं कर रहे. What is the third molar doing? हम तो उसको use नहीं कर रहे. What is the coccyx or the tailbone doing? So it had multiple flaws. Remember the word appetency, MCQ question. Remember the word inheritance of acquired characters, MCQ question. Remember the word use and disuse of organs, and remember the word Jean-Baptiste de Lamarck. Is that clear? Give me a high five. Those of you understood on my screen. High five now. Chalo. These are the words जिनसे MCQ आएंगे. इनके अलावा इस particular topic से MCQ आने का chance कम है. These are the words. If you've understood the words, right? If you've opened your NCERT, mark कर लिए आपने words notes में लिख लिए. Come on guys, 1 like now. Jean-Baptiste de Lamarck. Homework which I'm going to see in the chat section right now. Right now. इन्होंने कुछ books लिखी हैं. What are the names of the books? 100% MCQ question, but this happens to be your homework. इन्होंने कुछ बुक्स लिखी है, उनका नाम बताइए. चलिए जल्दी 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 now on the chat section, not this chat section, main chat section. I'm going to be looking for it. चलिए आइए. Darwin. So when I talk about Darwin, I have to talk about a ship called HMS Beagle.
इस शिप पे बैठ के ही वेंट टू अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. ही बेसिकली वेंट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. सो दे वर ट्राइंग टू circumnavigate the world. What were they trying to do? They were trying to circumnavigate the world. Right. So I'm talking about Darwin, HMS Beagle, circumnavigation of the world, and he went to a special island जहां basically इनको काफी चीजें clear हुई. The name of the island was the Galapagos Island. Galapagos Island के साथ साथ he was greatly influenced by two scientists. दो साइंटिस्ट थे जिनसे ये बहुत ग्रेटली इन्फ्लुएंस हुए थे. एक ने पॉपुलेशन के बारे में बात की थी, एक ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में बात की थी. उन दोनों साइंटिस्ट का नाम 5 करोड़% एमसीक्यू में आएगा. चलो बताओ उन दोनों साइंटिस्ट का नाम. होमवर्क नंबर 2. बच्चों ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में करवा चुकी हूं. व्हेन आई हैव डन द डिटेल स्लाइड्स ऑफ एवोल्यूशन, टेल मी द नेम्स, कम ऑन माय स्क्रीन्स एंड इन द कमेंट सेक्शन नाउ. और जितने लोगों को उस वाली क्लास से याद है, हिट लाइक बटन नाउ 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 नाउ. चलो कम ऑन गाइस, आपको जोश से भरना पड़ता है यार, खुद तो ऐसे हो जाते हो एकदम मेहनत ही नहीं करना चाहते हो. चलो, सो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लिए किसने हेल्प किया था? इसका नाम आर से शुरू होता है. पॉपुलेशन के लिए किसने हेल्प किया था बताइए? पॉपुलेशन के लिए किसने हेल्प किया था? बीच में आर आएगा, ARW. क्या है बताइए? गुड, वेरी गुड. एंड पॉपुलेशन स्टडीज, कैनॉन्स ग्रोथ कर्व टाइप की स्टडी किसी साइंटिस्ट ने की थी जिससे बहुत इंफ्लुएंस हुए थे? चार्ल्स डार्विन. इट स्टेट्स दैट ऑल स्पीशीज, एक्चुअली चार्ल्स डार्विन ने कहा क्या? सो मैं HMS बीगल और गैलापागोस मिटा रही हूं. चार्ल्स डार्विन ने कहा क्या? ही सेड दैट ऑलवेज ओवर प्रोडक्शन होगी. लेट मी राइट डाउन द पॉइंट्स ऑफ चार्ल्स डार्विन बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ही ऑलवेज सेड दैट ओवर प्रोडक्शन होगी. हमेशा देयर इज गोइंग टू बी ओवर प्रोडक्शन. हमेशा ही सर ये रूल है. देयर हैज टू बी ओवर प्रोडक्शन ऑफ द लिविंग स्पीशीज. जब भी ओवर प्रोडक्शन होगी, सम ऑफ देम, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, सो द कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स विल गेट मिक्स्ड ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन ऑन मियोसिस एंड वेरिएशंस विल बी गिवन टू द ऑफस्प्रिंग्स. सो वेरिएशंस होंगी. राइट. अब जिसके पास भी बेटर वेरिएशंस हैं, जिसके पास भी ऐसी वेरिएशंस है जो अच्छी वेरिएशंस है, जो बढ़िया वेरिएशंस है, एनीबडी हु हैज सच वेरिएशंस, डज ही और शी हैव अ बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल? सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल एंड अप फाइटिंग विद ईच अदर एंड फाइनली द वन व्हिच हैज द बेटर वेरिएशंस, देयर विल बी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. ओनली wherever we have a good variation accumulating, a good gene accumulating, there only we have survival of the fittest. Say yes or no, ma'am, right now on my screen. Right now on my screen. Will there be survival of the fittest there? Absolutely. Right? So natural selection, nature select करेगा, nature उसी को select करेगा जिसके पास best genes होंगी. There has to be survival of the fittest. Individual की ability to compete, survive और reproduce ज्यादा होनी चाहिए. जो भी ज्यादा reproduce करेगा, obviously उसके offsprings का number ज्यादा होगा, variations उसमें ज्यादा होंगी because sexual reproduction ज्यादा हुआ है. And that particular organism will have a better chance of survival. पर यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये आती है. It is a nice theory, it's a good theory, it's a right theory, it's a true theory. Why did we move to neo-Darwinism, which was given by Dobbs-Hansky? Write this down, it's in your NCERT, very important. Why did we have to move to something called neo-Darwinism? Anybody in my class? Why did we have to move to neo-Darwinism given by Dobbs-Hansky? Is because he could not explain कि ये variations कहाँ होंगी, because he was unaware about something called genes. So he did not know about sexual reproduction, he did not know about variations, he did not know about recombinations. So the genetic angle was missing. That's where a lot of assertion reasons used to come till last year, and that's where a lot of MCQs can be asked right now. The angle of variation was missing. This entire angle was missing. Is that clear to you? Is that clear, everybody? Is that clear that the entire angle of variation was missing? Coming to Hugo de Vries. Hugo de Vries gave the theory of mutation. Mutation is anything which is very sudden. Let me write it down from you, Hugo de Vries. Right? Are you writing it down? There's a homework I gave you here about the book. There's a homework I gave you about the two scientists who greatly influenced Darwin. And here I'm going to give you the homework. On which plant did he work? Let me tell you, the name of the plant is somewhere related to this person. On my screens, guys, you have to give me the homework now. चैट सेक्शन में, और जो चैट सेक्शन में होमवर्क देगा उसको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे एक प्राइज देने वाली हूं. जो भी चैट सेक्शन में होमवर्क देगा उसको टेलीग्राम ग्रुप पे प्राइज मिलने वाला है. डन? आइए. सो ह्यूगो डी व्रीज. Hugo de Vries on my screen. Hugo de Vries gave the theory of mutation.
Hugo de Vries gave the theory of mutation. Mutation is sudden, something which is very random. It's very sudden. It is directionless. इसकी कोई direction नहीं होती है. Forward जा रहा है या backward जा रहा है. Absolutely directionless होता है. We have no idea कि कहाँ जा रहा है, forward या backward. It's directionless. Therefore, it cannot be used as a conducive vehicle for mutations because suddenly किसी की पूंछ आ सकती है. Coccyx can expand. Expansion of the coccyx is called an atavistic feature. It's regressive. It's retrogressive. It may not be forward. Is that clear? और जिस प्लांट की इसने स्टडी की थी OL, शॉर्ट फॉर्म बता दिया, रिलेटेड टू OL, उस प्लांट में जंपिंग जीन्स होती हैं जो डिस्कवर की थी बारबरा मैकलिंकॉक ने. उस प्लांट में जंपिंग जीन्स होती हैं जो डिस्कवर की थी बारबरा मैकलिंकॉक ने. Perfect. So now that we've done these theories, can we move ahead and do each one of them in a little more detail? So I'll give you some theory material which you can write and do them in more detail. Chaliye. So let's go Lamarckism, Darwinism, Hugo de Vries. I'm going to start again with Lamarckism and finally move on to the evidences of evolution. Whatever I'm teaching you in these classes is very, very important from both NEET as well as MCQ point of view. So please sit with your papers and pens and make sure that every word which I'm telling you is down on your copies. So let's come to the theory of Lamarckism. मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला you need to tell me the book which Lamarck has written. I told you the complete name, Jean-Baptiste de Lamarck. I also told you about, yes, we've not taken the pen out, so I'm going to take the pen out here, keep it here. I told you how they were small and unable to reach the branches and then the extensions of their necks happen. You'll be very surprised to know that we and giraffes, we both have 7 cervical vertebrae in the neck. So the ancestors of giraffes, this is basically use and disuse. So whichever organ you use more, he or she giraffe, we don't know, started to extend their neck. Yes, gardan upar karne lage. So obviously the neck extended. The ancestors of giraffe had a short neck, but they had the habit of eating leaves from the tall trees. Habit isliye tha because their evolution happened in the grasslands of Africa. Now grasslands of Africa mein over competition and there were so many antlers, deers, you know, the wild buffaloes which Africa is famous for. So all of them were grazing animals, right? So dhire dhire ghas khatam ho gayi. So only those could survive who could eat the higher up trees. As they reached for the high leaves, the necks became longer. The character of longer necks passed on to their descendants, making a long neck giraffe. But only those characters will pass down which are present in the gametes, right? और एक person था August Wiseman, उसने theory of germplasm दी थी, but he basically, that was again a false theory because he said कि somatic cells से germs बनते हैं. That's wrong. Gametic cells are different from somatic cells. So theory of inheritance of acquired character states that evolution of life forms occurred by use and disuse of organs. ये Lamarckism का hallmark है. This is the hallmark. This is exactly why his theory is famous. Evolution by use. The long neck of giraffe is due to continuous elongation. To forage means to eat leaves. पर आपको ये पता होना चाहिए. Then why do? अब इसका against क्या-क्या theory लोगों ने बोला? Please, very important, write it down. Snake का pelvic girdle क्यों है? उसने तो बड़ी देर से क्रीप एंड क्रॉल करना शुरू कर दिया है. हमारे यहाँ थर्ड मोलर्स क्यों हैं? हमारे पास निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन और थर्ड आईलिड क्यों हैं? राइट, हमारे पास अपेंडिक्स क्यों हैं? सो ऑल ऑफ दीज ऑल्सो आर अगेंस्ट द थ्योरी कि कई बार वेस्टिजियल ऑर्गन्स, सो यूज एंड डिसयूज के मेन जो पॉइंट अगेंस्ट बनता है वो है प्रेजेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स. Right? So that is why his theory was not really accepted. Moving ahead to the next one. Come on my screens. Come on, बच्चों. चलिए, natural selection, very, 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 very important. I want you to do one thing for me. Will you do that? Will you do that? Will you do that one thing? Like, please, bachcho, this is required. You need to really like our lecture, guys. Come on. Natural selection is based on the following facts. What are the following facts on which natural selection is based? The heritable minor variations, right? Inherit होता है, whatever nature selects is inheritable, but saltation नहीं है. There is no single jump that suddenly the organism slept, सोते हुए कुछ और है, अगले दिन उठा तो कुछ और ही पैदा हो गया. That does not happen. There is no single jump which happens. So it's heritable, very minor variations, overproduction by organisms,
There is always overproduction by organisms, limited natural resources. जब भी overproduction होगा, there always will be competition, there will be struggle for existence kind of a thing. Natural resources limited होते हैं, तभी तो Camon's growth curve बनेगा. Everything I'm linking and teaching, are you under? अगर unlimited है तो फिर तो कोई problem ही नहीं है. It keeps on happening like this. Why are you attending my lecture at 6 o'clock, 10 o'clock and all these times is because the seats are very limited. Had the seats been unlimited, there is absolutely no problem. You get my point? There is absolutely no problem. So struggle for existence and obviously survival of the fittest. There is survival of the fittest. That is very, very important. So Staphylococcus aureus before mutation, राइट अब म्यूटेशन किसकी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया है यहां पे एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दे देती हूं लेट्स चेंज द कलर ऑफ द पेन MRSA मिथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को सुपरबग कहते हैं व्हाट इज इट कॉल्ड इट्स कॉल्ड योर सुपरबग व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सुपरबग अंडरस्टैंडिंग बाय सुपरबग इज इट इज अ यू रिमेंबर मैंने थोड़े दिन पहले जो मैं आपको रेगुलर क्लास ले रही थी आई टोल्ड यू अबाउट नोजोकोमियल इन्फेक्शन आई लर्नड इट इन कॉलेज इट इज अ इन्फेक्शन व्हिच यू गेट फ्रॉम हॉस्पिटल्स yes or no which you get from physicians which you get from hospitals are nosocomial infections so these nosocomial infections happen because of methicillin resistant staphylococcus aureus they happen because of methicillin resistant staphylococcus aureus is that clear say yes ma'am no ma'am is that clear they happen because of methicillin resistant staphylococcus aureus MRSA is that clear so देखिए इसकी जनरेशन में एक चेंज हुआ इसने चेंज करके म्यूटेशन करके ये रेड कलर का बन गया कैन यू सी दैट एवरीबॉडी ऑन माय स्क्रीन प्लीज कैन यू सी दिस तो इसमें मतलब इसके पास एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस की प्लाज्मिड में जीन आ गई सो इट इज अ वेरिएबल थिंग राइट हेरिटेबल वेरिएशन और ये यूजफुल होना चाहिए वेरिएबल यूजफुल सो सी आफ्टर सम टाइम द ग्रीन आर लेस एंड द रेड आर मोर इज दैट क्लियर दैट शोज दैट नेचर सिलेक्ट्स द वन विच इज यूजफुल टू अस वेरी इंपॉर्टेंट मूव अहेड वेरिएशंस येलो एंड ब्राउन राइट अब इनका क्या हुआ इनके देखिए जो इनका caterpillar hai the eggs when they hatch and they give you caterpillars half of them are brown half of them are yellow now it's a bark of a tree when you look at a bark of a tree can you see these are brown ones say yes ma'am no ma'am if you look at the bark of a tree can you see these are brown obviously the ones which are brown it's so I mean simple the ones which are brown overproduction of offspring leads to competition for survival yes अब जो brown है वो कितने easily camouflage हो रहे हैं How easily are they getting camouflaged? Yes or no? See? Yes or no? And obviously this will be easily seen and eaten. तो इसकी population हो जाएगी कम and इसकी population हो जाएगी ज़्यादा. Something exactly happened in Industrial Revolution के बाद वाला England, which is known as Post-Industrial Revolution England. Before the Industrial Revolution, the lichens were more. Because the lichens were more, the white ones, the white moths were easily camouflaged and the black ones were easily seen. After Industrial Revolution, soot deposit हो गई and sulfur dioxide का level बढ़ गया because of which the lichens became dead. And उसके बाद but obviously what happened the black ones got camouflaged in the black bark white ones दिखने लगे उनका नंबर उल्टा हो गया so that is natural selection तीन तरह की होती है अगर बीच वाला मतलब तीन हाइट के लोग हैं बहुत टॉल बहुत ड्वार्फ और एवरेज हाइट एवरेज वालों को बीच वालों को चूज कर रहे हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन या लोग बहुत लंबे हो रहे हैं या लोग बहुत छोटे डायरेक्शनल सिलेक्शन और या लोग लंबे या छोटे बीच वाला बेचारा है ही नहीं डिसरप्टिव सिलेक्शन व्हाट काइंड ऑफ सिलेक्शन इज इट disruptive selection so मैं what is the cause of speciation Hugo de Vries मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया मुझे पेड़ का नाम बताइए the name of the plant on which Hugo de Vries did experiment Hugo de Vries Carl Correns Eric von Tassemark वही तीन लोग हैं जिन्होंने रीडिस्कवर किया है मेंडल का काम he talked about yes you're right guys like guys share subscribe guys comment please this is the minimum that you can do for your favorite Vani ma'am come on right he talked about mutation theory what did he talk about mutation theory absolutely but mutations hote nahi because mutations are sudden mutations are atavistic they take you backwards mutations are sudden mutations are atavistic mutations are saltatory it's a one jump which does not happen in reality no
Doesn't work like that. Yes or no? Yes? चलिए आगे बढ़ते हैं. Paleontological evidences. What is paleontological evidences? Fossils. So the study of fossils is called as paleontological evidences. Is that clear? Is that clear? What are the study of fossils called? The study of fossil is called as paleontological evidence. There are many methods for studying, fossil age estimation, C14 method, right, phosphorus method. But the most important one, which comes in MCQ as a question, which is the most trustworthy method. So the most trustworthy method is electron spin resonance method. Extra information, very important. Come on, extra information, very important. Study of fossils, point number one. Point number two, fossils के लिए बीरबल साहनी is very important, very famous in India. Questions आते हैं paleobotany, paleozoology पे questions आते हैं. Study of plant fossils, paleobotany, plant fossils में extra information दे देती हूँ. Sporopollenin पे questions आते हैं when it comes to fossils. Study of fossils is called as palynology, specialized fossil pollens. Right, everybody? Paleontology and palynology. Fossils are the remains of the hard parts of life forms found in the rocks, earth crust. Cast बना देते हैं. Usually these hard types are called as casts. Right. Fossils indicate the connecting link between two organisms. For example, Archaeopteryx, जो connecting link है between reptiles and birds. Reptilian characteristics हैं claws, bird characteristic है beak, but beak के अंदर teeth, which is again a reptilian characteristic. They had feathers as well. Right? They give an idea about the form and structure of extinct animals. Study of fossils in sedimentary rocks में सबसे ज़्यादा बनते हैं, इसलिए राजस्थान में because sedimentary rocks हैं बहुत ज़्यादा fossils पाए जाते हैं. Because whenever the animal, suppose दलदल टाइप का एरिया होता होगा, the animal has gone down to drink water, वो धंस गया, उसके ऊपर layer by layer over a period of very many years deposition होती रही, so he got embedded and the fossils was produced. Mount Vesuvius, it was a very active fossil in Italy. The Mount Vesuvius में the volcano just erupted once, right, leading to fossil formation. The geological period, जितना deep मिलेगा, this is a very very deep statement and very important. जितना fossil deep मिलेगा, that means that much old the organism is. जितना fossil ऊपर की सतह में मिलेगा, that means that much new the fossil is. Morphological, anatomical evidences, I've done it so many times, guys. Please go home, see my evolution lectures, which I've seen, which I've shown to you before. Very 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 important. Chaliye, so homologous organs, analogous organs and analogy. So homologous organs वो हैं which are fundamentally similar. अगर आप मेरी बाजू देखोगे और whale का flipper देखोगे और bat का wing देखोगे, humerus, radius ulna, carpal, metacarpal, phalanges. I repeat, humerus, radius ulna, carpals, metacarpals and phalanges. I do repeat again, humerus, radius ulna, carpal, metacarpal, phalanges. So they are fundamentally similar in structure and origin but adapted for different functions. This phenomenon is called as homology. In whales, it's meant as a flipper. In bats, it's meant to fly. In humans, it's meant for dexterity. I'm able to write and I have a decent handwriting as well. So it's meant to hold a pen and to write something. That's called as dexterity. Understood? Analogous organs, the organs having similar function but different structure and origin. This phenomenon is called analogous organs. Wings of insects and wings of birds, right? Insects may, it is just an appendage. It's an attachment. Let me write this down for you. It's just a appendage. It's just another attachment, appendage. Whereas in birds, it is nothing but, come on. Yes, it is a, come on guys. It is a, it's a bone. It's a forearm. It's a forearm. It's a modified forearm meant to fly. Right? Eyes of octopus and mammals. Flipper of penguins and dolphins. Penguins, it doesn't do anything. Porpoises and dolphins, it helps in swimming. So that's your analogous. The organs having similar function
but different structure and origin. Right, everybody? Similar function. Penguins ke andar and dolphins, it doesn't do anything outside, right? But once it enters the water, it helps it to swim. Swimming, eyes, vision, right, everybody? Chaliye. So can we move ahead? Octopus is anyways very important, one of the brainiest organisms on earth. Animal kingdom and plant kingdom, jab aap jaise we'll go even closer to the examination. So animal kingdom and plant kingdom, I'm going to focus more and more on that as and when we go closer to the examination. Divergent and convergent evolution. I've made a beautiful chart. एक काम करिए, पहले फोटो ही ले लीजिए. I've made an awesome, amazing chart. एक काम करिए, पहले आप लोग फोटो ले लीजिए divergent and convergent evolution की. चलिए. Yes, everybody. So divergent and convergent evolution. Divergent का मतलब क्या होता है? It's an English word. आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं और आपने पूरा divergent evolution का classical example है Darwin's finches. Right? So land area में जब थे तब एक ही तरह की finch थी. When the volcanic eruption took place, I hope you know Galapagos Islands, which are a group of around 14 to 20. It's a archipelago kind of a thing. It's a group of islands. And they were volcanic islands, or they are volcanic islands, right, everybody? So जो finch जहां जहां गई, अगर किसी island पे उसको seed ज़्यादा मिला, it started to eat seed. किसी island पे उसको maybe warblers खाने को मिले, it started to eat that. किसी island पे उसको cactus का sap suck करने को मिला, it started to do that. किसी island पे it started to hit the bone and hit the wood in the tree and take out insects. It started to do that. So divergent evolution is from one source. When you diversify and form different types of organisms, that's called divergent. When you are different, but all of you are doing the same thing, that's convergent. For example, all the insects have wings as appendages. They're just attachment. And all the birds have a forearm. In fact, the pectoral girdle modified to fly. That's your forearm. Are you getting my point? Are you getting my point? So convergent is different types meeting at one point, which is the one thing that they do. Divergent is from one point they are diverting. The origin of homologous organs due to adaptations to different needs is called as divergent evolution. Divergent evolution is a process by which related species become less similar in order to survive. Related hai, but they become less similar in different environmental conditions. अलग अलग जगह पे अलग अलग हिसाब से वो अपने को ढाल लेती हैं. There was just one Darwin's finches, and then they diversified. That's your divergent evolution. 100% MCQ, 100% this table can come in your board exams also. Convergent evolution, the origin of analogous organs due to adaptations for life in similar habitats is called as convergent. They met. See this? All of them have humerus, radius, ulna, carpal, metacarpal phalanges. Unrelated species become more similar in order to survive in similar environmental conditions. Converge. ये देखिए सब में सेम है, पर कोई फ्लाई कर रहा है, करेक्ट, कोई फ्लिपर है, किसी में वॉकिंग का काम करता है, दैट्स डाइवर्जेंट. व्हेन दे बिकम सिमिलर. एक बोनी फिश है, कार्टिलेजिनस फिश है, अलग अलग हैं. बोनी एंड कार्टिलेजिनस फिशेस आर डिफरेंट, बट सब में फ्लिपर्स आए टू, सब में क्या है, फिन्स आए टू swim. Convergent. Is that clear? One is chondrichthyes. Ichthyology is the study of fishes. Herpetology. What is herpetology? On the comment section now. Ichthyology is the study of fishes. Ornithology is the study of birds. Malacology is the study of snails. Chireptrology is the study of bats. They come in exams. What is herpetology? Is it snakes or insects? Entomology is insects. Herpetology is snakes. Ichthyology is fishes. Malacology is snails. Chireptrology is bats. Very, very important. Moving ahead to the next question on your slide, please. Chaliye. Evidence, biochemical evidences. आप कोई भी आप any living organism, AUG has to stand for methionine, UUU has to stand for phenylalanine. So similar in proteins and genes. This is the reason why we can do biotechnology. This is the reason why if you put human insulin gene in a E. coli, it will be able to produce insulin for you, because
Similarity of proteins and genes, similar in other biomolecules and metabolism. Biomolecules लगभग similar है. अब तो हम humulin बनाते हैं, which we've artificially started to create in the laboratories. The human insulin by joining 31 to 20 amino acid, propeptide C हम हटा देते हैं, A और B को हम join कर लेते हैं. But पहले हम calf insulin लेते थे, right? पहले हम horse बेचारे को tetanus करवाते थे, anti-tetanus serum वहां से लेते थे. Now we make it artificially in the laboratory. Obviously, antigenic antibody reactions होते थे, but not up to such a great extent because biochemically हम हर एक चीज के थोड़ा बहुत similar है. It shows how we have evolved. Evidences for evolution by natural selection. Nature select करता है उस organism को जो अपने particular environment के लिए maximum suited है. अगर वो अपने environment के लिए suited नहीं है, हम कभी भी उसको pick नहीं करेंगे, nature उसको choose नहीं करेगा. Biogeographical evidences. Now, before we move ahead, you should know that once upon a time the earth was a mass of land altogether called Pangea, right? पैंजिया में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया सेपरेट हो गया. ऑस्ट्रेलिया तब सेपरेट हुआ जब तक अर्थ पर मैमल्स नहीं आए थे. एट दैट टाइम द रियल यूथेरियंस हैड नॉट कम एंड द पाउच्ड एनिमल्स और प्रोटोथेरियंस और प्रोथेरियंस वर देयर. तो तब ऑस्ट्रेलिया सेपरेट हो गया. अर्थ पर मैमल्स आ गए. मैमल्स वर मोर वेल डेवलप्ड देन द पाउच्ड एनिमल्स एंड बिकॉज ऑफ विच द मैमल्स ओवरपावर्ड देम एंड वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गए. बट ऑस्ट्रेलिया वॉज बायोजियोग्राफिकली separate with vast oceans and therefore the monopoly of the mammals could not reach Australia. The monopoly of the mammals could not reach. इसलिए अभी तक तस्मानियन डेविल देख लीजिए, कोआला बेयर देख लीजिए, कैंगरू देख लीजिए, ऑपसम देख लीजिए, तस्मानियन डेविल देख लीजिए. Is that clear? So there are a lot of variety of organisms in Australia. That's your biogeographical evidence. अगर आप अर्थ को दोबारा रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, you will see it will fit like a jigsaw puzzle. Adaptive radiation, right? A process of evolution of closely related species in a given geographical area starting from a point. एक point से अलग अलग हो गए. डार्विन्स फिंचेस गैलापागोस आइलैंड में यही हुआ. ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियल्स हुए. मैंने आपको बताया कैसे अर्थ वाज पैंजिया एंड प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया took a little while because it was separated with oceans from the rest of the earth. Very, very important. So with this we come to nearly the end of evidences of evolution. Homologous, analogous, convergent, divergent, adaptive radiation. 500% one question will come. Have absolutely no doubts about it. 500% एक question आएगा from adaptive radiation, from convergent evolution, divergent evolution, from homologous organs and analogous organs. Any doubts? Any doubts? Perfect. Right? Okay. Moving ahead to the Hardy-Weinberg principle. इसकी तो मैंने स्पेशल स्लाइड्स कराई हुई हैं, इसके मैंने स्पेशल MCQs करवाए हुए हैं. It's very raised to power infinity important. Very important. चलिए. So what is your Hardy-Weinberg principle? Right? ये तीनों चीजें करवानी है. बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. चलिए, pay attention please. Hardy-Weinberg principle says that allele frequencies in a population are stable. राइट एक जितनी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कितनी बार एक जीन रिपीट कर रही है, हाउ मेनी टाइम्स इज अ पर्टिकुलर जीन रिपीटिंग is known as allele frequency. So it says allele frequencies in a population are stable and constant from generation to generation. जब ये frequency change होगी, ये एक बार जब तक evolution नहीं हुआ है, it is stable. एक बार ये change हो गई मतलब क्या हो गया? एक बार ये change हो गई मतलब क्या हो गया? Evolution. एक बार ये change हो गई, what has happened? Evolution has happened. The gene pool, the total genes and their alleles in a population remains a constant. कितनी genes हैं और उनकी कितनी alleles हैं, right? कितना, you know, okay, this is a gene, capital T, इसकी allele है capital T, small t, so इनका number in a population should remain constant. एक population freely interbreed करती है. अगर मैं small t या dwarf लोगों को breed करने से रोक दूं, remember what I'm telling you, it's very important. अगर मैं small t को breed करने से रोक दूं, देखिए आपके पास ये हो सकता है, आपके पास ये हो सकता है, या आपके पास ये, all these three types of people will freely interbreed. इसको आप p मान लीजिए, q मान लीजिए, pq मान लीजिए. अगर आपने इनको हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो आप देखो 100 ईयर बाद अगर आप
आपने स्मॉल टी की जीन आने ही नहीं दी, स्मॉल टी को पॉपुलेशन में आने ही नहीं दिया, स्मॉल टी वाले लोगों को रिप्रोड्यूस करने ही नहीं दिया, सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्मॉल टी की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और अगर स्मॉल टी की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो कैपिटल टी की बढ़ जाएगी। सो देखिए पहले ये दोनों बराबर थे, अब इसकी कम हो गई और इसकी, सो सारी पॉपुलेशन यही है, इसकी जीन फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। कहते हैं अराउंड 6000 ईयर्स अगो देयर वाज एब्सोल्युटली नो ग्रीन आई कलर, वो अभी आया इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, ब्राउन एंड ब्लैक आई कलर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये क्या हो जाएगा, देयर इज अ पर्टिकुलर चेंज इन दी फ्रीक्वेंसी, चेंज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? Understood everybody? चलिए, so the gene pool or total genes in a population remain constant. This is called as genetic equilibrium or Hardy-Weinberg equilibrium. Sum total of all the allelic frequencies is 1. That means p square q square plus 2pq has to be 1. Sum total is 1. In a diploid organism, P and Q are the frequencies of alleles A and small a. P capital A है, Q small a है, और देखिए ये देखिए, is that clear? ये देखिए, is this clear? तो ये क्या होगा, ये तो आपको पता ही है ना, P ये Q और PQ कैपिटल ए स्मॉल ए, और इनकी वैल्यू 1 का मतलब है कांस्टेंट, दैट मींस A कैपिटल A स्मॉल कैपिटल A स्मॉल a, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या रह रही है, कांस्टेंट। अगर ये वैल्यू चेंज हुई दैट मींस या कैपिटल ए बढ़ रहा है या स्मॉल ए कम हो रहा है या स्मॉल ए बढ़ रहा है कैपिटल, दैट मींस कहीं ना कहीं जीन्स में कोई ना कोई चेंज हो रहा है। Yes, so the number should remain constant. This is what Hardy-Weinberg principle says. It is a tool for predicting evolution. So the moment the number changes, that means the climax community in ecology, जैसे हम पढ़ते हैं, several values होती हैं, नीचे से शुरू होता है ऊपर तक जाता है। So जैसे जैसे अगर नंबर चेंज हुआ, that means the pioneer से जो climax तक पहुंचा, climax में कोई चेंज हो रहा है। चलिए, सो ये फैक्टर्स हैं जो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को अफेक्ट करते हैं। अगर कहीं पर भी जीन माइग्रेशन, अब आप ये देखिए, इन इंडिया, मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूं, आई डोंट थिंक सो किसी बायो टीचर ने आज तक ये वाला एग्जांपल यूज किया है जो मैं अभी आपको देने वाली हूं। सो प्लीज ध्यान से इस एग्जांपल को फॉलो करिए। जीन माइग्रेशन क्या कहता है? जीन माइग्रेशन, जीन माइग्रेशन कहता है, इंडिया में ना एक कॉन्सेप्ट है घोस्ट विलेजेस का, राइट? अगर अभी भी आप गूगल करोगे तो आपको घोस्ट विलेजेस का पता चल जाएगा। घोस्ट विलेजेस का ये मतलब नहीं है कि वहां पे भूत रहता है, ऑब्वियसली नहीं, ऑब्वियसली बिकॉज रूरल एरियाज में एम्प्लॉयबिलिटी, एजुकेशन, हर एक चीज की देयर इज अ लिटिल लेस अकाउंटेबिलिटी, तो नहीं कहेंगे बिकॉज एजुकेशन इज नॉट दैट गुड, द वर्किंग एटमॉस्फेयर इज नॉट, है ही नहीं, जॉब्स नहीं है। सो देयर इज अ माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन। तो अर्बन में पॉपुलेशन ऐड हो रही है और रूरल में पॉपुलेशन नेगेटिव हो रही है, येस और नो? अर्बन में पॉपुलेशन ऐड हो रही है और रूरल में पॉपुलेशन नेगेटिव हो रही है, येस और नो ऑन माय स्क्रीन्स प्लीज, राइट? ऑब्वियसली मैम आप कहोगे हाँ मैम क्या बात कर दी, तो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो रूरल और अर्बन का डिवाइड आपको पता चल गया, राइट? तो यहां से पॉपुलेशन की एग्जिट हो रही है रूरल से, तो यहां पे लिख दो एमिग्रेशन, दैट मींस जीन्स आर मूविंग आउट। और अर्बन में इसीलिए बैंगलोर का ये हाल है बिकॉज इट वॉज नेवर मेंट फॉर द काइंड ऑफ पॉपुलेशन दैट इट इज केटरिंग टू। It was supposed to be a small city. It wasn't meant to be the IT hub of India, the startup hub of India, the Silicon Valley of India. That's not how it was created. You get my point? तो यहां पर population ऐड हो रही है, एंट्री हो रही है, इसको इमिग्रेशन कह दीजिए। यहां से एग्जिट और यहां इन, right? This is gene migration. Flow of population from one population to another. जहां से जाएगी वहां की जीन फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, जहां ऐड होगी वहां की जीन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। जीन फ्रीक्वेंसी चेंज इन बोथ पॉपुलेशन, यहां पे कम यहां पे ज्यादा, इट्स अ जीन फ्लो। अगर मल्टीपल टाइम्स हो जाए इट्स कॉल्ड एज जीन फ्लो। इट गोज फ्रॉम वन टू दी अदर। जेनेटिक ड्रिफ्ट को हम सी वॉल राइट इफेक्ट भी कहते हैं। What do we call it? Seawall Wright effect. It is a sudden chance phenomenon. Write it down. It's a sudden chance phenomenon. What do you understand by a sudden chance phenomenon? बताइए.
What do you understand by the word it's a sudden chance phenomenon? इसका मतलब है, आपको पता है अभी थोड़े दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर क्राइसिस हुआ था. Obviously, to maintain the flora and fauna of Australia, because it's in the southern hemisphere, वहाँ पे आग लगती है, it's a very natural phenomenon. But the scale of the fire this year, it's very important for it to rejuvenate its flora and fauna. That's how Australia maintains its very delicate ecosystem also. It's a phenomenon which should happen in Australia. But this year, because of the extreme weather changes, the phenomenon hua, it was of massive scale and led to the death of hundreds and thousands of animals and plants. Was it a chance phenomenon? किसी ने आग थोड़ी ना लगाई. It was a chance phenomenon. Was it a sudden phenomenon? Yes, right. और जो बेचारे kangaroos, zebras तो चलो अफ्रीका में होते हैं, नॉर्थ, बट जो भी exotic koalas या kangaroos बेचारे वहां फंसे रह गए, opossums जो भी फंसे रह गए, was it a chance event from them? वो अपने आप थोड़ी ना रहे कि अब आग है तो I'm going to jump into the fire. Obviously no. तो सीवॉल और सीवॉल, अगर ह्यूमंस को कोई फर्क नहीं पड़ा, बच्चों you know there are hundreds and thousands and billions of humans on the earth. अगर कुछ हजार लोग या कुछ मिलियन लोग भी you know they don't live anymore, ह्यूमन पॉपुलेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ह्यूमन पॉपुलेशन में जीन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज द जीन पूल, the total number of genes is very vast, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. But whenever the population is small, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जब भी पॉपुलेशन स्मॉल होती है, द सैंपल साइज, एज आई रेड इन थर्ड ईयर कम्युनिटी, आपको पता है जब हम थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में होते तो एक कम्युनिटी मेडिसिन होती है. कम्युनिटी मेडिसिन में वी गो आउट एंड वी डू ऑल दीज काइंड ऑफ सैंपल स्टडीज, राइट एवरीबडी. तो जब भी सैंपल साइज छोटा होता है तभी कोई इनफ्लक्स या इफ्लक्स का फर्क पड़ता है. अगर सैंपल साइज बहुत, देखो आपके घर में पार्टी है, आपने बहुत ज्यादा खाना बनाया, 2 लोग कम आए या 4 लोग ज्यादा आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ता. आप सिर्फ 2 लोग खाना खाने वाले हो, मम्मी और आप, पापा गए हुए जॉब पे, 3 लोग आ गए, तो विल यू बी एबल टू सप्लाई टू देम? नो. सो द पॉपुलेशन साइज जब स्मॉल होता है तभी प्रॉब्लम होता है. एक्सीडेंटल होता है, राइट, इट्स बाय चांस, कोई करता नहीं है. यस, फ्रीक्वेंसी चेंज. अब देखो कोआलास की जीन्स थी 100, मान लो इसमें से 50 कोआलास की डेथ हो गई, तो जीन फ्रीक्वेंसी बहुत कम रह जाएगी, राइट. तो जो न्यू सैंपल पॉपुलेशन होती है उसमें जीन फ्रीक्वेंसीज बहुत ज्यादा चेंज हो जाती हैं. इसमें एक और बॉटल नेक फिनोमिनन भी आता है. अब देखिए, मान लीजिए नॉर्थ अटलांटिक में 5000 सील्स थी, तो उनकी जीन्स इतनी है, 5000 सील्स थी नॉर्थ अटलांटिक ओशन में. हंटिंग हुई 50 सील रह गई, ओनली 50 सील्स रिमेन. आई एम गोइंग टू डू इट हियर, राइट. सो 5000 सील हंटिंग होने की वजह से ओनली 50 सील्स आर रिमेनिंग. सो यहां पे पॉपुलेशन इज 50, यहां पे अच्छे से लिख देते हैं, यहां पे पॉपुलेशन वाज 5000. Is that clear? 50 and 5000. Did you see that? Everybody on my screen. This is called bottleneck phenomenon. बहुत ज्यादा जीन से जब आप बहुत छोटे पे आ जाते हो, that's called as bottleneck phenomenon, right? और देखो बेटा, अब जो ये 50 हैं, अगर ये दोबारा 50,000 बन जाएंगे, इनका कंजर्वेशन कर दो, आप इनका कंजर्वेशन कर दो, यू कैन कंजर्व देम. ये दोबारा 50,000 बन जाएंगे. आई अग्री विद यू, आई डोंट डिसएग्री विद यू, आई अग्री विद यू, दोबारा 50,000 बन जाएंगे, राइट. बट क्या ये 50 से ही 50,000 बने? सो क्या इन 50 को मैं फाउंडर स्पीशीज कह सकती हूं? मतलब इन 50,000 में जो जीन्स होंगी वो एग्जैक्टली इन 50 वाली होंगी, सो 50 को मैं फाउंडर कह सकती हूं. ऐसे बहुत देर पहले अफ्रीका के कोस्ट में, फ्रॉम होलैंड पीपल केम सेलिंग एंड दे केम टू द कोस्ट ऑफ अफ्रीका, एंड अफ्रीका के कोस्ट पे आके उनकी बोट टूट गई. सो दे हैड टू स्टे डाउन देयर एंड दे स्टार्टेड टू इंटरमैरी अमंग्स देमसेल्व्स. दे बिकेम द अफ्रीकनर पॉपुलेशन. फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो लोग सेल करते हुए होलैंड से आए थे, उन लोगों में से कुछ लोगों को हचिनसन्स डिजीज थी, बिकॉज दे इंटरमैरिड. उस पूरी अफ्रीकनर पॉपुलेशन में हचिनसन्स डिजीज बहुत ज्यादा है. सो दैट्स योर फाउंडर इफेक्ट. म्यूटेशन तो आपको पता ही है, एनी सडन ड्रामेटिक जेनेटिक चेंज बिकॉज ऑफ यूवी रेज, बिकॉज ऑफ एक्स रेज, बिकॉज ऑफ केमिकल्स इज नोन एज म्यूटेशन. इट्स अ सडन चेंज. इज दैट क्लियर? अब आ जाइए आप टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पे, राइट. सपोज करिए ये जो आपको कर्व यहां दिखाई दे रहा है, इजी कर्व. सो दीज पीपल आर 4 feet, these people are 5 feet in the middle, and these people are 6 feet. So you have average height, tall height and short height. You have short height, average height and
tall height. Now if you push the people towards one side, that means सारे लोग जो हैं वो आपके 6 फीट के हो गए. This is called as directional selection towards a particular direction. Right everybody? Peak shifts in one direction. अगर बीच का ये इसको डायरेक्शन मान लेते हैं, ये एरो बनाया हुआ है, राइट? अगर पीक एक तरफ को शिफ्ट हो रही है 6 फीट, मतलब इसकी मैं नया एरो बना के देती हूं आपको. ये आपका मेन है, तो डायरेक्शनल क्या होगा आपका? या ड्वार्फ ज्यादा हो गए, तो या आपने इस तरफ को शिफ्ट किया या आपने इस तरफ को शिफ्ट किया. दिस इज योर डायरेक्शनल सिलेक्शन. डायरेक्शनल सिलेक्शन, इंडिविजुअल्स ऑफ वन एक्सट्रीम या टॉल, ये आपके 4, 5, 6. तो ये 6 फीट बढ़ रहा है, ये 4 फीट बढ़ रहा है, बीच का मीडियन गायब है. अगर आप स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, आप क्या करते हो? दोनों एक्सट्रीम्स गायब कर दो. 4 फीट गायब, 6 फीट गायब, बीच का बढ़ा दो. स्टेबल, यू हैव स्टेबलाइज द मिडिल हाइट. एंड डिसरप्टिव, आप बीच का गायब कर दो. आधी पॉपुलेशन को 4 में बांट दो, आधी पॉपुलेशन को 6 फीट में बांट दो. So selection is nothing what nature does. So nature chooses according to the genes which are best. When you stabilize the middle population and you remove the extremes, it's called stabilizing selection. When you move the population to either one of the extremes, removing the middle part, directional selection. When you disrupt it and make two graphs, either tall or short, either fair or dark, and you remove the muletto or you remove the middle ones, that's called as disruptive selection. Is that clear? Amazing lesson. Name the phenomenon by which rapid quick speciation. Come on. And guys, इतनी देर हो गई, अभी तक लाइक्स बढ़े ही नहीं. Yes, तब से मैम इतना बोल रही है, 1 घंटे से ज्यादा के लेक्चर ले रही है, पूरा 12th डिटेल में करा रही है, आपने अभी तक लाइक किया ही नहीं है. क्या फायदा होगा बच्चों, फिर बता दो मुझे. Yes, जेनेटिक ड्रिफ्ट सडन. लेट्स नाउ मूव टू ह्यूमन एवोल्यूशन. मैंने ह्यूमन एवोल्यूशन पे एक पूरी क्लास ले रखी है. दिस इज जस्ट अ लास्ट मिनट क्विक रिविजन ऑन ह्यूमन एवोल्यूशन. आई हैव टेकन 1 कंप्लीट क्लास ऑन ह्यूमन एवोल्यूशन. यू हैव टू गो बैक होम एंड सी इट गाइस, और देयर इज नो अदर ऑप्शन. आपको देखना है, मतलब देखना है. आइए, ड्रायोपैथिकस. सो ड्रायोपैथिकस इज एप लाइक, यहां से शुरू हुआ था. रामापैथिकस 3 to 4 मिलियन ईयर्स पहले पाया गया है. मैन लाइक बोन्स डिस्कवर्ड इन इथोपिया एंड तंजानिया. मैन लाइक प्राइमेट्स हाइट अप टू 4 फीट. इंडिया में भी पाया गया था. वी कॉल्ड इट शिवापैथिकस. इट वाज फाउंड इन द लोअर रेंज ऑफ हिमालयाज. इज दैट क्लियर? शिवालिक हिल्स में पाया गया है, इसलिए नाम शिवापैथिकस रख दिया है. ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स में हंटेड विद स्टोन वेपन से हंट करने वाला फर्स्ट आया ऑस्ट्रेलोपैथिकस. हैबिलिस इज टूल्स. तो सबसे पहले जिसने टूल्स अच्छे से बनाना शुरू किया, होमिनिड है, ह्यूमन लाइक, राइट? मीट नहीं खाया, कुकिंग थोड़ा बहुत करता था, ब्रेन कैपेसिटी एवरेज थी, बट हैंड मूवमेंट से टूल्स बनाना शुरू किया. हैबिलिस, द वन विच स्टैंडर्ड टू स्टार्ट स्ट्रेट, एट मीट, होमो इरेक्टस, निएंड्रथल मैन एंड क्रो-मैग्नॉन, एंड फाइनली होमो सेपियंस. 40,000 to 1 lakh years ago ब्रेन कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है. लिव्ड इन ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, और स्किन यूज करता था अपने आप को सर्दियों में प्रोटेक्ट करने से. बरिड द डेड. सोशल कॉन्ग्लोमरेशन, सोशल कस्टम्स शुरू हो गए थे. एंड फाइनली होमो सेपियंस केम अराउंड 10,000 to 75,000 years ago. Prehistoric cave art developed करी about 18,000 years ago, and around 10,000 years ago we developed agriculture, then we developed the wheel, and the rest this is history. Today we've developed the internet, and you and me are taking classes through this awesome channel called Vedantu Biotonic. Guys, like now. I'm not going before you. Like now, guys. Like, share, subscribe. Get more people on the channel, guys. Come on, don't do this. You have to do this much at least for your favorite channel. Come on. Done. So with this, we've come to the end of one short videos on evolution. Before I say bye bye to you, name the species of human being which is most closely related to modern man. क्रो-मैग्नॉन मैंने अभी आपको बताया था, राइट? इस पे मैंने पूरे डिटेल चैप्टर वाइज लेक्चर्स भी बनाए हैं. इफ यू नीड देम, प्लीज मेक श्योर दैट यू सी देम. ठीक है, अब हम आज के लिए विदा लेते हैं इसी दुआ से कि हम जल्दी कल मिलेंगे. आई डोंट नो व्हाट एम आई सेइंग. आई एम लाइक ट्राइंग टू say some Hindi here, but anyways, never mind. Like, share, subscribe. See you tomorrow, same time. Till then, my dear kids, take care. Lots of love. Do like, share, and subscribe to our amazing channel. And in the comment section, all the questions that I asked now. In the comment section right now, all the questions that I asked you.
Bye bye. Take care. See you in the next class. Bye.